Namaskar and welcome to Sansad Television. I am Vishal Dahiya and you're watching our show House Highlights, where we bring you details of day's development in both houses of Parliament. Let's begin with the headlines first. Lok Sabha approves demand for grants and appropriation bills relating to ministries and departments for 2022-23. India's policy on Ukraine steadfast and consistent, asserts S. Jaishankar in Rajya Sabha, emphasizes dialogue and diplomacy to resolve Ukraine crisis. India has emerged as the strongest investment destination in the world, says Piyush Goyal in Lok Sabha. And discussion on demands for grants of Ministry for Railways in Rajya Sabha. Railways Minister Ashwani Vaishnav says government has no plans to privatize Indian Railways. And now the parliamentary news in details. Lok Sabha passed the Demand for Grants and Appropriation Bill 2022, authorizing the government to withdraw funds from the Consolidated Fund of India for its working as well as implementation of programs and schemes for the fiscal beginning 1st of April. The Lok Sabha discussed demand for grants of different ministries, including Railways, Road Transport and Highways, Civil Aviation, Commerce and Industry, and Port Shipping and Waterways. The appropriation bill authorizing payment and appropriation of specified sums from the Consolidated Fund of India for 2022-23 was introduced by Finance Minister Nirmala Sitharaman. The bill was later approved by voice vote after rejecting several cut motions moved by opposition members. This completes two-thirds of the budgetary exercise by the Lok Sabha. The Lok Sabha will now discuss the finance bill, which essentially contains the government's tax proposals. The budget exercise will complete with the passage of the finance bill. Union Minister Piyush Goyal replied to the debate on demand for grants of the Commerce and Industry Ministry in the Lok Sabha today. He informed the House that the government e-marketplace or GEM portal was launched in August 2016 for online purchase of goods and services by all central government ministries and departments as well. On startup, he said that the government is taking steps to support them and over 65,000 are registered with the ministry. जो चीज आप खरीदते हो उसके दाम पब्लिक में चले जाते हैं कि भाई आज एक राज्य ने इस दाम पे खरीदा, कल दूसरे राज्य ने दूसरे दाम पे खरीदा। तो हमारे देश में तो मीडिया बड़ी सतर्क रहती है, तो वो देखते रहते हैं कि कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। तो एक प्रकार से जनता के बीच जानकारियां देने से जनता और मीडिया हमारी निगरानी रखे, ये जेम के पोर्टल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया। टेक्नोलॉजी का भी लाभ मिल गया सबको, स्पीड भी हो गया। कहाँ टेंडर्स महीनों महीनों तक लटकते पटकते रहते थे, कहाँ डिसीजन मेकिंग में कभी अधिकारी कभी मंत्री हिचकते थे, सब पारदर्शी कर दिया जेम पोर्टल के माध्यम से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। और आज ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुबह देश को एक खुशखबरी दी कि कल दोपहर को 2 बजे जेम पोर्टल, अकेले एक पोर्टल पे 1 लाख करोड़ की खरीद सरकारी व्यवस्थाओं ने जेम पोर्टल के माध्यम से, और तेजी से इसमें वृद्धि होते जा रही है। पिछले 4 वर्षों में 1 लाख करोड़ हुआ था, इस वर्ष अकेले 1 लाख करोड़ क्रॉस कर गया। और मैं तो सभी को आमंत्रण करूंगा कि आप अपनी अपनी राज्य सरकारें, अपने अपनी पंचायत या लोकल बॉडीज को भी कहें कि जेम से खरीदें। और इसकी ताकत कैसे बनती है, जो प्रधानमंत्री जी की सोच है कि भाई समझो एक सरकार कपड़े यूनिफॉर्म खरीदती है अपने पुलिस के लिए और वो 5 लाख यूनिफॉर्म खरीदती है, तो एक दाम मिलेगा। पर अगर सभी सरकारें और केंद्र की सब फोर्सेस की यूनिफॉर्म उस पर आ जाएगी, तो देखिए कितना बड़ा मार्केट हो जाएगा, कितना इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ सकता है, और उससे कीमतें भी कम होगी, गुणवत्ता भी बढ़ेगी। और इसका मैं विस्तार से नहीं बोलूँगा, पर पूरे सदन को याद होगा, एलईडी बल्ब इसका एक सीधा उदाहरण है जहाँ पे हमने विश्व को टक्कर दी और इकोनॉमीज ऑफ स्केल लाके गुणवत्ता भी सुधारी। Lok Sabha took up discussion and voting on the demand for grants under the control of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways for 2022-23. Let's listen in to some key speakers who spoke during the discussion.
the budget nowadays no ministry single-handedly operate their commitment to the people of the country. Honorable Prime Minister has given us a right way to put our thought and also to put our effort with better planning. That is Prime Minister Gati Shakti National Master Plan, multimodal connectivity. यानी कि हम सबको इंटीग्रेटेड अप्रोच लेना होगा. अभी हम लोग सागरमाला हो, हमारी मंत्रालय से जो भी काम किया जा रहा है, हम प्रदेश सरकार को और प्राइवेट प्लेयर्स को, अलग अलग स्टेक होल्डर को हम साथ में लेते हैं. माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है सबको साथ लेके चलो तब देश मजबूत होगा. इसलिए पीएम गति शक्ति का मतलब यही है कि इट इज ए इंटीग्रेटेड अप्रोच. वी हैव टू वर्क टुगेदर. सेंस ऑफ टुगेदरनेस इज द प्रिंसिपल to the key of this Prime Minister Gati Shakti principle. I believe this should be realized by everyone. इतना बड़ा उन्होंने हमें रास्ता दिखाया, जिस रास्ते से हम अगर चले तो सब मंत्रालय का अब हम जब भी पोर्ट डेवलप करते हैं तो पोर्ट डेवलप करने के समय में हम ये हमेशा ख्याल रखते हैं कि रोड कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी और पाइपलाइन, पेट्रोलियम के पाइपलाइन और water supply के pipeline और बिजली power lines, all these kind of line ministry and infrastructure ministry will have to integrate to each other so that we could develop better facility for the people of the country. It was World Happiness Day on 20th March last Sunday. As per United Nations Sustainable Development Reports, there is a global happiness index of 146 countries. Sir, our rank is 136. In augmenting the infrastructure of major ports, first, to develop mega capacity ports in high potential areas of Gujarat, Maharashtra, Orissa, West Bengal, northeastern states, and other clusters at an investment of over INR 80,000 crores rupees. The earlier speaker also spoke about the 7,500 kilometer coastline which we have and how best we can utilize this to enhance our economy. No doubt we can do that, but how many new ports major ports have been constructed in the past? Because this project has been implemented from 2015 to 2035, that is 20 years. Already 7 years are passed. Almost 33% of your time is gone. It is the same company to whom BJP government of Gujarat had allocated 1.21 lakh square meter of land at Dahej, Gujarat at 100% reduced rate. Despite the adverse report of CAG, the land was sold at 700 per square meter instead of rupees 1400. The company was caught in one of the highest scam, that is rupees 22,892 crore in 2016. This is the main problem why they are not coming is there's a delay in Indian ports, sir, and there's a draft constraints, sir, high tariffs, sir, high bunkering charges, sir. These are some of the issues that our ministry has to resolve, sir. This will make our imports cheaper and our exports competitive across the world, sir. जल यातायात प्राचीन समय से भारतीय यातायात प्रणाली में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है. इसकी लंबाई करीबन 14,545 किलोमीटर है तथा गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा इन सभी नदियों में से हम जहाज़ों द्वारा यातायात करते आए हैं. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र राज्य के विभिन्न भागों में जल मार्गों के विकास हेतु धनराशि आवंटित करने की आवश्यकता है. भारतीय शिपयार्डों को वर्ष 2016-17 से शुरू करने से कम 10 वर्षों के लिए उचित मूल्य जो भी कम हो के 20% की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. वित्तीय सहायता की यह दर प्रत्येक 3 वर्षों में 3% तक घटाई जाएगी. Our Kerala tradition, our backwaters, there are enough potentiality there. For Kerala's ABCs, A for Ayurvedic, B for backwaters, and C for culture. There also we can see this kind of things. Yes. I have sea pollution, I told, sir. Kindly give me some few minutes, sir. I will sea pollution, it's a plastic. So this one day sea can be called as what is called plastic ocean like that.
As a global superpower, our port connectivity and water-based infrastructure is as important as our roads and other infrastructure, sir. To that extent, a stagnant budgetary allocation does not correctly represent India's ambition as a water superpower and should be improved in certain areas. Totally bad for the state is that the jurisdiction of the port has been increased from the port to one Betul. All our beaches in the south, nothing can come up there without the permission of the port trust. I would like MPs raised issues of public importance during question hour in the Lok Sabha today. Minority Affairs Minister Mukhtar Abbas Naqvi has said that the allocation to his ministry is specifically for empowerment of minority communities. I would like to know whether the government has any plan to make a sub-plan for Muslim minorities like SC, STs. हमारी मिनिस्ट्री मुस्लिम मिनिस्ट्री नहीं है, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है और माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में 6 नोटिफाइड माइनॉरिटीज़ हैं। उसमें जो है वो मुस्लिम हैं, जैन हैं, सिख बंधु हैं, क्रिश्चियंस हैं, पारसी हैं, बौद्ध हैं और सभी समाज के हिस्सों का विकास हमारी मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एजुकेशन में जो है वो बजट कम हुआ है। मैं केवल इतना जानकारी देना चाहता हूँ कि 2013 में 14 में 3 करोड़ 3 लाख जो लाभार्थी थे वो विभिन्न स्कॉलरशिप योजनाओं के थे। आज की तारीख में जैसा कि मैंने पहले कहा कि 5 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा लाभार्थी 7 साल में हो गए। उसके अलावा एजुकेशन में बजट जो है वो 2013 में 14 में 1888,000 था और आज की तारीख में 2515 करोड़ आज की तारीख में है, तो वो भी बढ़ा है। इसलिए हमारी कोशिश है कि समाज के सभी हिस्सों के साथ साथ जो माइनॉरिटी हैं वो भी डेवलपमेंट के बराबर के हिस्सेदार भागीदार बने। On being asked by Anandpur Sahib MP Manish Tiwari about the specific steps being taken to incentivize shale gas and exploration as well as recent significant discoveries, Petroleum Minister Hardeep Singh Puri informed the House shale has not been established as yet in India. However, he assured about existence of shale in India, which needs to be addressed. Under the hydrocarbon exploration and licensing policy, are there any specific steps which have been outlined in order to incentivize or boost the exploration of shale oil or gas? And number 2, have there been any significant discoveries of either shale oil or gas in the country in the previous few years? Because of the relative neglect of exploration and production in the past, as I mentioned, our E&P has been static at 6 to 7%. I'm very happy to inform the honourable member this year our production of domestic gas will go up by 18%. This is part of our overall E&P policy. We have so far not been able to establish shale in India so far, but there is shale. It has to be addressed, and we have also made certain steps, I would call that a policy, for seeing how we can exploit it. And I'd be happy to share those with you. Let's now move on to Rajya Sabha. Railway Minister Ashwini Vaishnav on Thursday said the central government has no plans to privatize the Indian Railways. Replying to members of the upper house after a discussion on the working of his ministry, Vaishnav asked all states to work together with the centre for the efficient operation of Indian Railways. The Railway Minister asked the states to work together with the central government for the efficient operation of Railways Ministry. किसानों के लिए और छोटे उद्यमों के लिए जो पहला एक्सपेरिमेंट हुआ किसान रेल का, उस एक्सपेरिमेंट से लर्निंग्स लेने के बाद में अब एक बहुत ही अच्छा एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है। किस तरह से एक नया प्रोडक्ट बनाया जाए, किस तरह से एक क्यूबॉइड की भी संरचना की गई, एक जो एयरलाइंस में यूज़ होते हैं उन कंटेनर्स की भी एक्सपेरिमेंट चल रहा है। इसके अलावा एक और स्पेशल कंटेनर, छोटा कंटेनर बना के, जैसे कि जो हमारे एमएसएमई सेक्टर है, माइक्रो सेक्टर है और जो छोटे किसान हैं वो देश के किसी भी कोने से दूसरे कोने में सामान को पहुंचा सके एक सुलभ दर पे और एक सेफ वे में, उसके ऊपर भी एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट चल रहा है। बहुत जल्दी उसके अच्छे रिजल्ट आने चाहिए। ऑपरेटिंग रेशियो ज़रूर पहले की अपेक्षा जो उसमें परिवर्तन आया उसका सबसे बड़ा कारण है पे कमीशन की सैलरीज का।
वो बढ़ा, उसके कारण ऑपरेटिंग रेशियो पे उसका इम्पैक्ट हुआ, लेकिन बहुत जल्दी वो सुधर भी जाएगा। जैसे ही हमारा कार्गो का वॉल्यूम बढ़ता है वैसे वैसे ये सुधर भी जाएगा। दूसरा विषय है प्राइवेटाइजेशन का। मेरे पूर्ववर्ती ऑनरेबल श्री पीयूष जी गोयल जी ने बहुत क्लियरली सदन में कहा, इस हाउस में भी कहा, उस हाउस में भी कहा कि कोई रेलवे के प्राइवेटाइजेशन की बात नहीं है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इसका सोशल ऑब्लिगेशन है, और वही बात मैं एकदम क्लियरली दोहरा रहा हूँ, कोई इसमें रेलवे के प्राइवेटाइजेशन की बात नहीं है। Members cutting across party lines took part in this discussion, while Neeraj Shekhar of BJP said changes have been witnessed in the railways sector during the present government. TMC's Derek O'Brien questioned the government over merging the railways budget with the general budget. Let's listen in. मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जो गति शक्ति जो शुरू हुआ है, जिसके लिए कार्गो टर्मिनल बनेंगे, जो कम से कम 100 टर्मिनल बनेंगे अगले 3 सालों में, जहां पे कार्गो के लिए काम किया जा सकेगा। वंदे भारत जो ट्रेन चलने वाली है, 400 ट्रेनें नहीं चलेंगी अगले 3 सालों में। ये दिखा रहा है कि कैसे परिवर्तन हो रहा है। Nitish Kumar ji had a Tatkal scheme. Lalu Prasad Yadav ji had the wonderful Garib Rath scheme, which was his big idea. Mamata Banerjee had a Vision 2020 document, which we'll come to later. The Duronto Express, the Izzat Pass, for those below the poverty line. I want to ask this government, from 2014 to 2021, what's their one big idea which will sustain the test of time 10 years, 20 years from now? Sir, I press upon the need that Tamil Nadu needs more projects, more attention from the Railway Ministry, sir. Sufficient fund allotment is needed for the state Tamil Nadu, because not only new projects, sir, even a lot of old projects are pending in the state. During the trying times of COVID-19, Indian Railways helped in mobilizing the life-saving oxygen to various parts of India. When our Honorable Prime Minister Modi ji announced PM Garib Kalyan Yojana, Indian Railways helped in making sure the food grains are transported to every nook and corner of the country. This government, we have a totally hope they are doing lots of development for the northeastern region. Prime Minister has always have a special attention and special arrangement from the northeastern region. I believe this will be looked after by you. Sir, a separate railway zone. Now there the railway division is there, sir. A separate railway zone is required, sir, in the northeastern region. So I hope now all the state of the northeastern region have a railway connectivity. External Affairs Minister S. Jaishankar informed the Upper House on Thursday that India's position on the Ukraine conflict has been steadfast and consistent, as it has been seeking immediate cessation of violation and calling for ending the crisis through talks. Jaishankar was replying to a question in Rajya Sabha. Where our own position on Ukraine is concerned, it is very clear, sir. It is based on 6 principles. 1, that we call for immediate cessation of violence and end to all hostilities. We stand for peace. 2, we believe that there is no other way than a return to the path of dialogue and diplomacy. 3, we believe, we recognize that the global order is anchored on international law, UN Charter, and respect for territorial integrity and sovereignty of all states. 4, we call for humanitarian access to a conflict situation. 5, we ourselves give humanitarian assistance. We have given 90 tons of humanitarian assistance so far, and we are looking at providing more, especially medicines. And 6, we are in touch with the leadership of both the Russian Federation and Ukraine on this matter. The Prime Minister himself has spoken to the presidents of both countries. Responding to a question of Congress MP Shakti Singh Gohil, Tourism Minister G. Krishna Reddy informed the members that 1.42 lakh tourists visited Jammu and Kashmir in the last month. जम्मू कश्मीर का पर्यटन, जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, हमारे साथ जुड़ा हुआ है, और
अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी बहुत सही मायने में कहा था कि यहाँ की सिर्फ ज़मीन नहीं, हमें ऐसे काम करने चाहिए कि यहाँ के बसने वाले लोगों का ज़मीर भी हमारे साथ दिल से जुड़ा रहे। आपके रिटर्न रिप्लाई में आपने बातें की, उसमें सिर्फ गारंटी या लिमिटेड लोन फ्रॉम 1 लाख टू 10 लाख ऐसी बातें की है। असल में लॉकडाउन की वजह से पर्यटन पे बहुत बुरा असर पड़ा है। तो मैं जानना चाहता हूं कि आप कोई कैश नगद में सही हेल्प यहाँ के पर्यटन के बचाव के लिए करना चाहते हैं, यहाँ के लोगों के लिए, या नहीं? जम्मू कश्मीर के लिए केंद्र सरकार टूरिज्म दृष्टिकोण से अलग अलग कदम उठाए और अच्छे रिजल्ट भी आए। मैं बताना चाहूँगा, मैं लास्ट भी बताया सेशन में, लास्ट मंथ जो फ्लाइट्स आए हैं जम्मू में 1280 फ्लाइट्स जम्मू में सिर्फ, श्रीनगर में 2048 फ्लाइट्स आए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सिविल एविएशन को एनकरेजमेंट देते हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर देते हुए हम काम कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ अध्यक्ष जी मैं बताना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर में अगर कंपेयर किए तो देश में सबसे ज्यादा फाइनेंशियल असिस्टेंस भारत सरकार के द्वारा जम्मू को दिया गया है। Several matters of public importance were also raised during 0 hour in Rajya Sabha on Thursday, while BJP MP DP Watts raised the demand for one nation, one election to be implemented immediately. P. Bhattacharjee of Congress raised the issue of Rampur Haat killings in West Bengal. Meanwhile, RJD member Manoj Kumar Jha urged the government to revise minimum wage to protect the vulnerable section against the price rise and inflation. Let's listen. 1967 के बाद आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करते हुए संयुक्त विधायक दल की सरकारों को मिड टर्म बर्खास्त किया गया और उससे ऑनवर्ड्स एक देश मैनी इलेक्शन मोड में या परमानेंट इलेक्शन मोड में हमारा देश चला गया, जो देश की रिसोर्सेज पे, मैन पावर रिसोर्सेज एज वेल एज मटेरियल रिसोर्सेज पे एक बहुत बड़ा ड्रेन और भार है। तो मैं नेशनल इंटरेस्ट में आह्वान करूंगा कि इस पे बैठ के कंसेंसस अचीव की जाए और 5 साल में असेंबली, पार्लियामेंट और शहरी निकायों के चुनाव भी साथ हों तो देश हित में बहुत अच्छी बात होगी। Sir, one serious incident took place in my state, that is in Rampur Haat. 9 women were burned and killed. But you must give a notice. Children, sir, you must give a notice now. Sir, I am not discussing this thing. The state government going to investigate this matter. My submission to the House, we should keep silent for 1 minute just to pay the honor to the departed women people. कि एक आम शहरी, एक आम गरीब आदमी गांव में किस प्रकार अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकता है। व्यवस्थित तो छोड़िए माननीय सभापति महोदय, वो सपने भी नहीं देख सकता है व्यवस्था के। मैं मानता हूं कि आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से और सदन के बिहाफ में, क्योंकि इसमें हम सबकी वैचारिक भिन्नता के बावजूद भावात्मक भिन्नता नहीं हो सकती, हम सब एक दृष्टिकोण से सोचें। और मेरा मानना है कि सरकार की ताकत सदन से होती है और सदन की ताकत लोगों से होती है। अगर वो हमारे विमर्श के केंद्र में नहीं है तो मेरा मानना है सर कि आने वाले वर्षों में स्थिति बहुत गंभीर होगी। इसलिए मिनिमम वेज को लेकर के 18 वाली जो बात थी, अब तो उसके भी 4 वर्ष हो गए, फ्रेश रिवीजन हो। That's all we have in this edition of House Highlights. We'll come back again tomorrow with the details of developments in both houses of Parliament. Till then, keep watching Sansad Television. Thank you.